Yes, hello friends, good evening. Welcome on this expert talk show. I'm sure you'll be excited to see who is our expert today, and I would love to know more about that. So, before we invite our expert of the day, let us start the session. Do like, share, and subscribe our YouTube channel, Vipul the Wonderful. Press the bell icon to get the regular updates. And yeah, here we are revealing our expert of the day, Swathi Kiran, who will be speaking on how to network on LinkedIn. So let us invite our expert of the day. And before that, again, I'm requesting you to like, share, and uh, uh, comment on this session. Do follow us on LinkedIn if you're watching there, and do subscribe our YouTube channel if you're watching there. So let us invite our expert of the day. Yeah, hi Swathi. Hello, Vipul ji. Hope you're doing good. First of all, thanks a lot for inviting me to your show. It's Yeah, a pleasure pleasure to is be mine. as your. Pleasure is mine, and thank you so much for accepting our invitation and being here. And I would love to know more about your expertise on LinkedIn, and would love to Yeah, know more on how to network on LinkedIn. So yes, sure. audience, do join in and do welcome our expert of the day. Do ask your questions. Do like, share, and let us start the session. Swati Kiran is a LinkedIn expert who loves to help people in LinkedIn branding, and he is doing amazing job. Swati, before we start with the Q&A, tell us more about you and your life journey till now. Okay, that's amazing question. So, hey guys, thanks a lot for all the people who are joining us and who are listening to us. Myself, Swathi Kiran. So, I basically am from southern part of India, called from a state called Kerala, where I'm currently heading. I run a digital marketing agency by the name Audio C Hub. I am currently running I'm leading the agency as the founder, as its founder and CEO, and we basically cater to digital marketing services that we provide to IT and real estate companies. And so far we have catered around 40 plus clients till now, and it's been just 1 year since I started my agency. And a bit about me, I did my bachelor's into BCom. I passed out in 2018, and currently I'm pursuing my MBA as well from Jain University in the online mode, with majors into digital marketing and minors into e-commerce itself. So yeah, that's a bit about me. Wow, that's amazing. That's amazing, and you're doing great job. And just keep it up. So let us start the session with the very first question of the day, Swati. So why networking is important these days? So I'll tell you the why is it important, because LinkedIn is like I this is a data I read recently that India has officially reached 100 million active users on LinkedIn. Okay, and this is a data that I found when I read. So I was thinking that if we have to stand out and connect with the right person, networking is important, because it basically tells us like shows us like what we are trying to achieve. Like, if for example, networking is also important for job seekers, networking is also important for entrepreneurs, aspiring entrepreneurs, freelancers, and all. Why is it important? It basically helps you build a strong community. For example, now people see, let's take an example of the podcast itself. You basically had network with me, so that you basically send me an invite saying that, Swati, we are doing this podcast, would you love to be part of as a guest speaker? That was why, because it happened due to networking. You saw my profile somewhere, and on LinkedIn, because of my audio events that I used to host on every Tuesdays, and you came as a listener to my audio event, and you basically felt the spark, yeah, yaar, isko saath connect karna padega. That is the reason why you came and approached me. So networking for me is the fuel for everything. It is basically True. the most underrated skill a candidate possess these days. It's why I'm saying it's underrated, because they don't understand the importance of networking. आजकल का कॉलेज का स्टूडेंट्स को ये एक वहम होती है कि नेटवर्किंग मतलब सिर्फ सिर्फ एक कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना है, बस खत्म हो गया. It's not like that. Networking is not just about sending a connection request. ऐसे तो हो गया तो मैं एक दिन में मैं 200 या 300 connection request मैं खुद भेज रहा हूँ, है ना? So True, it's true, not just true. about sending a connection request, and like
it's basically about what you want from that person, what are you seeking, why are you want to connect with that person. That is the main reason. See, for example, if I am connecting with you, let's say, since you are into HR consulting, I went through your profile and I was looking for an HR consultant, I would just drop a DM, like message saying that, hi Vipul, I saw your profile, it's a very impressive, and I got to know that you are into HR consulting. I would love to get on the call with you because I want to discuss something regarding to HR consultancy for my consulting for my agency. That is how I would have approached Very you. true. So Very true. Very networking these true. days is important basically because it helps you build connections. It helps you to build bond. Bond is what I basically believe in. It's like it's because community. Like I'll explain this through two words. You'll hear a lot of LinkedIn experts use these two words. One is community, one is personal brand. Okay, these are two different. These are words which are interrelated, which networking can also help in. Okay, community means the number of people who are with you in your connection. It's just like basically you can say it's the same as the number of followers you have on Instagram. That is your community. Okay. And personal branding automatically comes because of your community. When you start posting content, when you give value, you build your own image saying that acha, then whenever one person comes and basically sees your profile, they know that अच्छा स्वाति को ये चीज के बारे में अच्छे से नॉलेज है एंड ये चीज के बारे में वो बात कर रहे हैं. So I basically build a personal brand on that. So that is one is community. It helps in building your community, and which directly helps you in building your personal brand. So I think networking is one of the underrated skill, and people should master the skill very well. And it will take time. I do agree it will take time because it's not just like every skill. It takes time, and you have to commit mistakes. Then only you will learn it. Without committing mistakes, even I committed thousand mistakes, then only I got to this level of how to network with people on LinkedIn. So I hope I have answered your question. Very, very well said. Network is net worth. You rightly said. So, networking is necessity nowadays to grow yourself professionally, personally. Very well said. Yeah. So, when we talk about networking, Mhm. so what are do's and don'ts of networking? Okay, do's and don'ts of networking. First, I'll go through the don'ts because that is like it is like you also agree with me that human psychology attracts negative things first, right? So True, I'll true, and it's also been said that if you will take care of don'ts, then you will definitely get the results. yeah. True. So don't says that I would say that don't just send them a connection request and leave it. आपको like अगर possible है just drop them a connection note saying that why you want to connect with them, how are you going to be benefited from that connection, and what like a call to action basically means what do you want to get, do you want to get into a call with me or do you want my personal guidance, like you want to get into a call, a phone call, a Google Meet call, a Zoom call, whatever it is. So I would divide the while you send a connection request, let's say I'm sending a connection request to you Vipul ji. So I will say I went through your profile, I liked your profile. First I'll say hi, this is Swathi Kiran, hi Vipul, I hope you're doing well, whatever it is. I saw your profile, it's very impressive. I would love to get on to a Zoom call or Google Meet call, whatever you like, with you to regard in regards to the HR consultancy that you give for agency, as I am also an agency owner. Hope to hear from you soon. Bus, that is enough. That is enough. That will basically initiate an action from that other person saying that अच्छा इसको ये reason के लिए मुझे approach कर रही है. That will basically make it easier for the other person to connect with you. That is the first don't. And second don't is never have an empty profile while connecting with the people. Let's say that I am connecting with you, I didn't have any, my profile is blank, I don't have a profile picture, I just have my name, not no bio, nothing, and I'm sending a connection request to you, and I didn't even send a connection note. So chances are that you might ignore me, right, saying that अच्छा ये तो fake profile हो सकता है. True, true. First impression is the last impression. Very Yeah, true. fake profile हो सकते हैं. That is another don't. Third don't is I would say is that never ever uh, ओके हिंदी में बात करना है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हिंदी में बोलूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं.
लोग बोल रहे हैं हिंदी में बोलो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो बेसिकली we मैं can क्या we बोल can रहा था। keep a we can keep a mix of Hindi English both, तो लोगों को ओके, नो प्रॉब्लम। कनेक्ट कर सकते हैं। या या सो मैं क्या बोल रहा था कि लाइक सिर्फ एक कनेक्शन रिक्वेस्ट मत छोड़ो, इसके पीछे एक कनेक्शन नोट डालो कि आप क्यों उसके साथ कनेक्ट करना है, वो आपको कनेक्ट करने की वजह क्या होती है, दैट इज द बेसिक नेसेसिटी। नेक्स्ट थर्ड डोंट इज दैट आपको ना, बहुत सारे लोग मेरे पास भी अप्रोच करती है, बहुत सारे लोग मेरे को हेल्प मांगती है रेफर करने के लिए, बट उन लोगों के पास वो पेशेंस नहीं है। लाइक अगर एक 10 मिनट या आधा घंटे में रिप्लाई नहीं करते हैं तो फिर से वापस मैसेज करते हैं, सर आप क्यों नहीं जवाब क्यों नहीं दे रहे। दैट इज नॉट, दैट इज अ बिग नो नो, बिकॉज आप दूसरों को टाइम को भी रेस्पेक्ट करना सीखो। अगर आप किसी को एक जॉब रेफर के लिए एक एचआर और एक रिक्रूटिंग मैनेजर के पास जा रहे हैं, गिव देम एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स या मैक्स टू मैक्स 7 days टाइम टू रिप्लाई, बिकॉज उन लोगों के पास बहुत सारे और लोग उनको अप्रोच कर रहा होगा फॉर द सेम रीजन। सो वो, एंड लिंक्डइन में एक ही दिक्कत है कि हम मैसेजेस को फिल्टर नहीं कर सकते। सो ये दिक्कत हो वेरी जाते ट्रू, हैं कि एज ह्यूमंस हम वो मैसेज मिस होने का चांसेस बहुत हाई है। वेरी ठीक है, ट्रू, वेरी ट्रू। हम भी हम भी ह्यूमन बीइंग्स है, हमारे अंदर भी बहुत कमियां होती है। सो हम मिस करने का चांसेस बहुत हाई होती है। सो दैट इज अ थर्ड डोंट। नाउ दीज आर बेसिकली 3 बेसिक डोंट्स दैट आई बिलीव इन। नाउ आई विल कम टू द डूज। डूज को तो मैंने ऑलरेडी बताया है, इज टू बेसिकली सेंड अ कनेक्शन नोट। एक कनेक्शन नोट डाल दो कि आप क्यों उसके साथ कनेक्ट करना चाहता है, आपका रीजन क्या होती है। सेकंड, आप एक अच्छा प्रोफाइल मेंटेन करो, जिधर आपको प्रोफाइल में बेसिक चीज होना चाहिए, एक प्रोफाइल पिक्चर, एक कवर फोटो, और एक डिस्क्रिप्शन में आप क्या करते हैं, क्या हो, आपको आप जगह जगह तो छोड़ दो, क्या कर रहे, व्हाट इज योर प्रोफेशन। थर्ड इज लाइक आपको बारे में थोड़ा, आपको अबाउट सेक्शन में अगर जाएंगे, आपको एक्सपीरियंस भी डालना पड़ेगा। लाइक आपको, लाइक फॉर एग्जांपल कितना साल का एक्सपीरियंस होती है जॉब मार्केट में, या कोई भी फील्ड, कोई भी फील्ड होती है, उस फील्ड में आपको कितना साल का एक्सपीरियंस होगा, वो सारे डिटेल्स आपके बारे में क्लियर कट मेंशन होना चाहिए। ठीक है, then once you have done that and you basically send a what a connection request, तो you can basically, chances are higher, I'm not saying that 100% हो जाएगा, उधर पे भी what वो क्या होते हैं, चांसेस कम होते हैं, उधर भी नंबर चांसेस, गेम्स खेलना पड़ेगा। ट्रू नंबर ट्रू गेम थोड़ा ट्रू। खेलना पड़ेगा आपको। लाइक आपको सिर्फ एक ही पर्सन के, लाइक मान के चलो आप जॉब अप्लाई करने जा रहे हैं, आप सिर्फ एक कंपनी में नहीं अप्लाई करेगा ना, रिलेटेड फील्ड का जॉब, आप 2 3 या 4 5 कंपनी में, 10 12 कंपनी अप्लाई करने के बाद ही बोलते हैं अच्छा मैंने इतना कंपनीज में अप्लाई किया, लग कहीं ना कहीं से एक इंटरव्यू कॉल आ जाएगा मेरे को, राइट। जस्ट ट्रू। लाइक दैट व्हेन यू आर कनेक्टिंग विद पीपल, आप यू आर, दिस इज द बेसिक थिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ। एंड अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, मेरा एक सबसे बढ़िया टिप होगा, आप एक कॉपी पेन लेकर, आपको ड्रीम कंपनीज जिधर आप काम करना चाहते हैं उसका नाम लिख दो, उन कंपनीज का नाम लिख दो इन प्रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बिग फोर्स में काम करना है, या गूगल टेक जायंट्स में काम करना है, जो भी है आपका इंटरेस्ट ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एंड आपका एक कंपनी, उन सारे कंपनीज को एक लिस्ट नोट डाउन कर दीजिए, एंड उसके बाद उस कंपनीज को एचआर को अप्रोच कर दीजिए, मैनेजर लेवल पोस्ट के लोगों को अप्रोच करके, ये जो मैंने बता दिया ना कनेक्शन नोट डालने का, वो आपको बेनिफिशियल रहेगा। वेल, आप अगर आप जॉब पर्पस के हिसाब से आप लिंक्डइन यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो माय सेकंड डू इज ऑलवेज ऑलवेज लाइक मेक अ स्टार्ट राइटिंग कंटेंट। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ वो भी बता दूंगा, बिकॉज मैंने सब लोगों को राज शमानी के बारे में पता है, राज शमानी कौन है क्या है। हम इट्स नो देयर इज नो नीड फॉर मी टू से हु इज राज शमानी, राइट। तो मैंने एक राज शमानी का एक कोट पढ़ रहा था,
10 साल, 10 years from now, you will be forced to get into content creation whether you like it or not. That is what he is saying, and that is true. I also believe in that, because Very true. लिंक्डइन आजकल एक सिर्फ एक जॉब सीकिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, इट्स ऑल्सो कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म। आप मानो या ना मानो, ये ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। सो आप कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करो। आप छोटी छोटी, लाइक आपका एक्सपर्टीज जो भी होती है, मान के चलो आपको डाटा कोडिंग के बारे में पता है, कोडिंग में आपका एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस शेयर कर दो। नहीं तो आप अगर फ्रेशर हो, लाइक 12th पास आउट हो गया हो, तो आपको लाइक आपने 12th का बोर्ड एग्जाम का टाइम कैसे आपने स्पेंड किया, आपके एक्सपीरियंस कैसा था, आपने क्या क्या प्रैक्टिसेस लिया था 12th का बोर्ड पास करने के लिए। बिकॉज 12th का बोर्ड के टाइम बच्चों के पास वो प्रेशर होती है ना, पास हो जाएगा या नहीं, वो प्रेशर होगा, तो आपने वो प्रेशर कैसे डाल दिया, आपने खुद का स्टोरी बता दो। because people like to connect with other people, that is the basic Very true. फंडा ऑफ लिंक्डइन इज, अगर मैं मेरे पर्सनल कहानी, पर्सनल स्टोरी एंड पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर होती है, वो लोगों को लाइक रीड करना बहुत पसंद है। लोगों को अच्छा Very लगता है true. अगर आप किसी के बारे में, किसी का स्टोरी, किसी को हमारा स्टोरी शेयर कर रहे हैं, आपके एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, उसमें से लाइक बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। Very true. एक अच्छे से एक जोक, लाइक ऑन अ लाइटली नोट, आजकल सबको ज्ञान देना बहुत अच्छा लगता है, be it any social media platform. So you should basically start writing content whenever you can, start writing content, because कंटेंट ऐसा एक चीज होती है जो लोगों के साथ कनेक्ट करती है। सो मेरे मेरे सही से ये 3 डूज और डोंट्स है जो नेटवर्किंग के लिए आपको मदद करेंगे। एंड अगर आपको लाइक कोई भी चीज लाइक एडवांस में जानना है, तो आप मेरे साथ पर्सनली 1-to-1 कनेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हर एक पर्सन के हिसाब से मैं बता नहीं सकता, बिकॉज वो थोड़ा पर्सनल साइड पे जाएगा। एंड Yes, very true. We are also flashing your LinkedIn ID, so audience you can connect with him directly. आप अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है तो आप अभी कमेंट में भी क्वेश्चन भी कर सकते हैं. We will try to cover that during the session. So very well covered. You rightly said what to do, what not to do, या and it was bang on. So now the next question is how to maintain an impressive profile for networking नेटवर्किंग purpose. पर्पसेस, ठीक है, ये भी मैं बता दूंगा। मैंने इसके लिए मैंने पहले भी एक चीज बता दिया है। आप हाउ टू मेंटेन इंप्रेसिव प्रोफाइल क्या होती है, आपको उसमें जार्गन्स अवॉइड करना है। जार्गन्स अवॉइड, जार्गन्स मतलब टेक्निकल टर्म्स, जो हाई एंड टेक्निकल टर्म्स, आपको लाइक जो भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री रिलेटेड टर्म्स अवॉइड करो। आपको ये, अगर मान के चलो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मैं कैसे लिखूंगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट, मान के चलो मैं गूगल में काम कर रहा, तो मैं लिखूंगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट गूगल, ठीक है। एंड मेरे पास मैं क्या कर, कितना साल, एंड मैं कितना साल का एक्सपीरियंस हूँ, एंड बेसिकली मेरे स्किल्स क्या होती है वो भी लिखेंगे। एंड उसके साथ साथ मैं एक प्रोफेशनल डीपी लिखूंगा। प्रोफेशनल डीपी इन द सेंस, टी शर्ट में भी डाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कुछ हार्ड फास्ट रूल नहीं है, बट अगर शर्ट में लगेगा, डाल सकते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं तो टी शर्ट भी अच्छा लगेगा। एंड आपको लाइक आजकल लिंक्डइन पे वो वीडियो वाला थिंग भी आती है, वो हमारे प्रोफाइल के हमारे वीडियो फ्रेम भी ऐड कर सकते हैं, अगर चाहे पॉसिबल है तो। अगर आपको कैमरा शाई होती है, तो यू कैन बेसिकली ऐड टेक्सचुअल कंटेंट टू अ वीडियो, एंड आप वो अपलोड कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप कैमरा फ्रेंडली है, तो बहुत बढ़िया रहेगा कि आप आपके बारे में बता दो, मैं ये करता हूँ। एंड अगर आप कोई भी सर्विसेज देती है, मान के चलो जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज देती हूँ, तो बोल सकते हैं मैं बी टू बी क्लाइंट्स के लिए, लाइक बी टू बी क्लाइंट्स ढूंढने के लिए मदद करता हूँ एजेंसीज को, वैसे कुछ भी होता है तो वो भी बता सकते हैं, ठीक है। एंड मेक श्योर यू हैव अ वेल रिटन बायो। वेल रिटन बायो में क्या क्या होगा, आप कौन हो, आप क्या कर रहे हैं फिलहाल, आपके पास कितना साल का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में, जो भी इंडस्ट्री में इंडस्ट्री से आप बिलोंग करता है, एट या एंड आपका स्किल्स क्या होती है,
एंड आपने जो भी प्रीवियस कंपनी में काम किया है, आपने क्या हेल्प किया, लाइक व्हाट डिड यू हेल्प द कंपनी अचीव, वो भी बता दो। ठीक है, दैट विल बी अ वेरी गुड प्रोफाइल। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ट्राई टू गेट एज मेनी इंडोर्समेंट्स ऑन लिंक्डइन, एंडोर्समेंट्स एंड रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशन ले लो, लाइक आपका एचआर मैनेजर या बॉस से, हायरिंग सुपीरियर मैनेजर से रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। एंड फेक रिकमेंडेशंस मत लो, बिकॉज आजकल एक ट्रेंड होती है फेक रिकमेंडेशंस लेने का, ट्रेंड होती है, वो मत करो, जेन्युइन होना चाहिए। वो आप मुझे रिकमेंडेशन तो मैं आपको दूंगा लाइक वाइज, ऐसा बहुत चलता है आजकल। हाँ सो हाँ दैट हाँ, डजंट लुक गुड, दैट डजंट दैट लुक इट गुड। डजंट लुक गुड। बिना काम करके आप कैसे रिकमेंडेशन दे दूंगे? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो वही है, तो वो मत फॉलो करो, अच्छे से रिकमेंडेशन दे रहे हो। एंड जो भी एक अगर आप लिंक्डइन के प्रोफाइल पे नीचे जाओगे, आपको स्किल्स वाला एक ऑप्शन देखेंगे, उधर आपका स्किल्स मेंशन करो, उसको एंडोर्स करने के लिए लोगों को हेल्प हेल्प मांग सकते हैं जो आपके साथ काम किया है बेसिकली। ठीक है, एंडोर्स कर सकते हैं, एंडोर्समेंट्स ले लो, बिकॉज वो बढ़िया लगता है। अगर मैं एक प्रोफाइल देख रहा हूँ तो मैं ये सब चीज नोटिस करते हो, लाइक कितना एंडोर्समेंट्स है, वो रिकमेंडेशंस है या नहीं। लगभग 10-15 रिकमेंडेशंस है, तो मेरे अंदर में एक इंप्रेशन होते है, हाँ चाहिए बंदा कुछ ना कुछ उखाड़ा है, इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ किया है। सो दैट इज व्हाट इट विल बेसिकली गिव। एंड एज सिंपल पॉसिबल, मैंने जैसे बोला था, ट्राई टू पोस्ट कंटेंट। एंड कंटेंट में मैं, ऐसा हार्ड रूल नहीं है, एटलीस्ट ट्राई टू पोस्ट कंटेंट एवरी वीकली, वीकली वंस एटलीस्ट पोस्ट करना है, कि हैबिट डाल दो। अगर हैबिट डालेंगे तभी ही आप वो फ्लो में जाएगा। अगर हैबिट में हो जाएगा तो इट विल बेसिकली हेल्प यू इन, आपको भी वो फ्लो आ जाएगी कि अच्छा, आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा, अच्छा आज मैंने कंटेंट नहीं डाला, कंटेंट डालना है। एंड मैंने एक बुक पढ़ा था, मैंने उसका नाम भूल गया था। इट सेज दैट इट टेक्स 21 days टू फॉर्म अ हैबिट। वेरी 21 ट्रू। दिन, 21 दिन कंटिन्यूस करना पड़ेगा अगर आपको एक हैबिट में एंटर होना है। 21 दिन, 21 days आपको एंटर करना पड़ेगा कंटिन्यूसली विदाउट ब्रेक। देन 21 दिन, 21st डे के बाद यू विल डू इट ऑटोमेटिकली, योर बॉडी एंड ब्रेन विल इट बी विल बिकम योर हैबिट, या। trained to do that, it will become your habit, तो आप ऑटोमेटिकली करेंगे। सो दैट इज ऑल्सो देयर। सो बट ऐसा नहीं, आज कुछ रूल नहीं है, ये कंटिन्यूसली करना पड़ेगा तभी ही आपको रिजल्ट आएंगे। एंड फर्स्ट, लाइक डोंट, मैं एक चीज बता दूंगा, कि मैं एक चीज बता दूंगा कि डोंट बेसिकली, जब आप कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, मेरे को अभी भी पूछता है, सर मेरे पोस्ट में इतना बहुत कम लाइक्स होती है, कम इम्प्रेशंस होती है, ये क्यों होती है? मैं एक चीज बता दूंगा कि इम्प्रेशंस और लाइक्स के पीछे मत भागो। आप जो भी चीज आपके मन से लिख रहे हैं, आप कंटिन्यूअसली लिखते रहो, एक दिन, एक ना एक दिन आपको कंटेंट भी वायरल हो जाएगा। मेरा अभी तक वायरल नहीं हुआ, एक भी कंटेंट पोस्ट मेरा वायरल नहीं हुआ। आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर माई फर्स्ट वायरल कंटेंट। हाँ, मैं भी मेरा पहला वायरल कंटेंट के लिए ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, सो दैट इज, बस लाइक्स और कमेंट्स, कितना कमेंट कर रहे हैं, कितना लोग लाइक कर रहे हैं, मेरे को कितना रीच आ रहे हैं, वो सब अभी मत फोकस करो। अभी आपका काम देख लो, जैसे श्री कृष्ण जी बोलते हैं ना, काम करो, बिना रिजल्ट देख के काम करो, कोई ना एक दिन आपको मेहनत आपको सफल लेके आएगा। Very, very well said. Just keep your efforts on, you will get the results definitely. तो बिल्कुल आपने सही बोला। And audience is appreciating. Yeah, JK editor is appreciating. Keep it up. Surekha, very good. Swathi, keep it up. Vaibhav is also there. Thank you, Vaibhav, for joining in. Yes, we will also cover the questions asked by the audience uh, at the end of the session. So बिल्कुल moving बिल्कुल। on, yeah, moving on to the next question. Uh, how, as you have rightly said, after a few years, everyone will have to get into content creation. ना चाहो या ना चाहो, आपको कंटेंट क्रिएशन तो करना पड़ेगा। सो वो हाउ डज कंटेंट क्रिएशन हेल्प्स इन नेटवर्किंग एंड बीइंग एन एक्सपर्ट? अगर आप कंटेंट, मैं ये क्वेश्चन ऐड ऑन करना चाहूंगा कि कंटेंट क्रिएशन इजीली कैसे कर सकते हैं, या ऐसा कुछ आपका एक्सपर्ट एडवाइस हो तो दीजिए हमें।
ओके, कंटेंट मैं फर्स्ट पहला क्वेश्चन बता दूंगा, पहला पार्ट बता दूंगा, फिर मैं दूसरे पार्ट पे जाऊंगा। कंटेंट क्रिएशन हेल्पिंग कैसे हेल्प मदद करती है नेटवर्किंग करने के लिए। मान के चलो मैंने एक कंटेंट डाला है, ठीक है, जो एंड कंटेंट ऐसे कंटेंट डालने से पहले मैं एक चीज बता दूंगा, आपको बताना, यू मस्ट हैव एन आइडिया ऑफ आपके कम्युनिटी में मैक्सिमम कौन सी तरह के लोग होते हैं। जॉब सीकर्स होती है, या एंटरप्रेन्योर्स होती है, या स्टूडेंट्स होती है। मान के चलो आप एक आपको ऑडियंस में स्टूडेंट्स होती है, बट मैं एक ऐसा चीज बोल रहा है कि जो मिड लेवल मैनेजर्स को हायर कर रहे हैं, मिड लेवल मैनेजर्स को टारगेट कर रहे हैं, तो मेरे कंटेंट तो वायरल नहीं होगा, कोई पढ़ेगा भी नहीं। बिकॉज द थिंग इज दैट मेरे कम्युनिटी में बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स ही होती है, तो मैं क्या लिखना पड़ेगा, कैसे जॉब क्रैक करना होती है, मेरी एक्सपर्टीज है। नहीं तो एआई टूल्स, or else we can also go for AI tools that will help you crack the job interviews. So, something like that. We can do something like that, because you first before getting into content creation, you must understand that first you should understand like maximum number of people in your community belongs to which category. Are they students, are they working professionals, are they freelancers, or are they entrepreneurs? If you don't do that analysis, it will, whatever however content creation you strategy you apply, it's not going to work. Okay, and मैं अब now I'll come to the first part of the question, the कि how does content creation help in networking. So मैं ओके दैट आई विल टेल यू। सी, मान के चलो मैंने एक कंटेंट, अच्छे से कंटेंट डाला है जो हर तरह के ऑडियंस को पसंद है, ठीक है। मान के चलो इट वाज लाइक एआई के बारे में है, हाउ एआई इज अफेक्टिंग द जॉब मार्केट। ये सभी तरीके से लोग सभी कैटेगरी के लोग को रीड करने में पसंद है, बिकॉज इट विल हेल्प एवरीवन गेट अ क्लियर आइडिया, ठीक है। सो मैंने वो कंटेंट डाला था, आपने देखा बहुत अच्छा है, तो ऑब्वियसली आप एक ना चीज आप तो आइदर आपने लाइक करेंगे या कमेंट करेंगे, ठीक है। आपने लाइक करेंगे या कमेंट करेंगे, आपको थॉट्स भी शेयर करेंगे वो पोस्ट पे। तो मैं क्या करूंगा, अच्छा, एंड शायद मैं क्या करूंगा, तो मेरे को आपने कंटेंट किया, लाइक पोस्ट कमेंट या रिएक्ट किया है मेरे पोस्ट पे, तो मैं भी उसको रिवर्ट बैक करेंगे। एंड बाद में आप क्या करेंगे, चांसेस आर दैट यू विल टर्न द बेल नोटिफिकेशन फॉर मी, ताकि आप मेरे पोस्ट मिस ना करें। तो Very true. दैट इज द साइकोलॉजी बिगिन हाउ कंटेंट क्रिएशन हेल्प इन नेटवर्किंग। तो बाद में आप देखते हैं मैं कंटिन्यूसली एआई के बारे में, हाउ इट अफेक्ट्स जॉब मार्केट, जो भी चीज आपको रीड करना पसंद है, मैं मान के चलो मैंने वही उसके बारे में ही मैंने बात किया था। तो वो क्या करेगा, आप शायद मेरे को एक कनेक्शन नोट भेजेंगे विद कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेंगे विद कनेक्शन नोट सेइंग दैट स्वाति आपका कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत रेसोनेट किया था, इसलिए मैं आपके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। बस हो गया, नेटवर्किंग हो गया उधर। Very well said. So good content will help you to create, fetch the good network. आपको you'll get the Yes, good it network. will definitely help you to fresh good network. And now coming to the second part, any easy tips to make content creation. There are a lot of websites that you can use. I use contentideas.io. I'll just it is a free website. आप वो to get content ideas. This website basically helps you to get content ideas in any topic. ठीक है, तो मान के चलो मुझे नेटवर्किंग के बारे में लिखना है एंड आई एम टोटली ब्लैंक, मेरे को पता नहीं क्या लिखना है, तो आई व्हाट आई डू इज आई गो टू contentideas.io. इट्स अ फ्री वेबसाइट, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। एंड मैं सिर्फ नेटवर्किंग के बारे में, there is a search bar where I can type networking and I can search. I'll get 500 results, articles relating to networking, and from there I'm so sorry, I can get ideas on what kind of how to mold my content. मैं वो ही फॉलो करता हूँ। आजकल लॉट ऑफ एआई टूल्स आते हैं लाइक contentideas.io. There are a lot of websites which I'll be uh, I'll be sharing in my post later on stages, ठीक है। एंड इसी तरीके कुछ नहीं है विपुल जी। हर अगर द थिंग इज दैट अगर हम बिना मेहनत +2 +10 और +2 पास हो जाएंगे तो सब कुछ सब लोग पास हो जाएगा ना। ट्रू ट्रू। सो आई विल एड ऑन कि थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे जो टूल अच्छा लगता है वो
आपको अच्छा लगेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, सो यू विल हैव टू Yes, कीप yes, that is ट्राइंग, also there. You यू have विल to यू विल try हैव टू different कीप, tools. तभी आपको एक आइडिया मिलेगा मेरे को you कौन you से will टूल have to अच्छे keep लगेगा. doing R&D, आपको थोड़ा-सा R&D करते रहना पड़ेगा। Yeah, बाकी that is देयर आर there. लॉट ऑफ, You have to do your own research. You have to try with lot of AI tools or lot of what I can say tips and tricks that आजकल lot of branding experts give you good genuine branding experts. I have to use that word. I'm so sorry I'm using this word, but I'm forced to use it because आजकल हर लोग brand personal branding expert बोलते हैं, but कम से उनमें से like बहुत सारे लोग they're not doing the justice. That's why I'm saying. So follow the right genuine people who are giving you genuine advices. ठीक है, उसका जो वेरी भी टिप्स एंड ट्रिक्स वो लोग दे रहे, आप सारे के सारे ट्रायल एंड एरर मेथड कर लो, जैसे विपुल जी ने बता दिया, एंड कोई ना कोई एक ट्रिक आपके लिए काम करेगा, वो ट्रिक आप पकड़ लो, उसके उसके हिसाब से आपको कंटेंट मोल्ड कर सकते हैं. very well said. So yeah, next question is, if you have to start from scratch, how is you going to approach networking on LinkedIn? Oh, that's a very good question. That is a very good question. This ये क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छा लगा. So अगर मान के चलो मेरे सारे कम्युनिटी मेरे से गायब हो गया, कहीं ना कहीं से मेरे लिंक्डइन बैन हो गया, खुदा ना खैर, मैं ऐसा प्रे करूंगा, तो माय स्ट्रैटेजी वुड बी फर्स्ट आई विल मेक अ बेसिक जेन्युइन प्रोफाइल. ठीक है, जिधर जो भी टिप्स मैंने बता दिए, जो भी चीज मैंने बता दिया, आई हैव अ गुड डिसेंट प्रोफाइल पिक्चर, गुड कवर फोटो, वेल रिटन बायो, वेल रिटन डिस्क्रिप्शन अबाउट माई सेल्फ, व्हाट आई डू, एंड एक अच्छी चीज, आई कनेक्ट विद पीपल ओनली इन माई निश. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, दैट इज वाई आई एम टेलिंग, मैंने ये मिस्टेक किया है एंड आई लर्न इट रिसेंटली ओनली. मैं क्या गलती करता था, आई यूज्ड टू कनेक्ट विद एवरी रैंडम एक्स वाई जी पर्सन. Never do that. Connect with the people whom you think can be of value to you and who are from your niche or industry. Niche मतलब क्या बोलते हैं, niche मतलब the expertise you have, whatever knowledge you have. अब जिस चीज के बारे में आपके पास knowledge है, जिस टॉपिक के बारे में आपके पास knowledge है, उस सेम रिलेटेड टॉपिक के इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्रिएटर्स के साथ कर सकते हैं. लिंक्डइन क्रिएटर्स, देयर आर अमेजिंग लिंक्डइन क्रिएटर्स आउट देयर ऑन लिंक्डइन. ठीक है, एंड बिकॉज एक बात बता दो, मेरे अगर मेरे पास 1 मिलियन फॉलोअर्स है, बट मेरे हर पोस्ट में सिर्फ 10 लोग कमेंट कर रहे हैं या लाइक कर रहे हैं, तो क्या फायदा 1 मिलियन फॉलोअर्स का. तो नेटवर्क के साथ साथ एंगेजमेंट भी मैटर करता है कि हाउ योर नेटवर्क इज एंगेजिंग विथ योर कंटेंट, सो दैट इज यस, ऑल्सो अ that is बिग also there. क्वेश्चन. That is also there. See, if I'm having 1 million followers, but only 10 people are engaging with me on my post on a regular basis, what is my point of having 1 million? वेरी ट्रू. That is not the point ना. You should always have that thing is quality over quantity. हमेशा ये रूल फॉलो करो, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, दैट विल लीड यू. मान के चलो बस शायद कभी कम से कम सिर्फ 10 या 2, मान के चलो यू हैव ओनली कनेक्टेड विद 20 गुड पीपल, बट दोस 20 गुड पीपल आर गोइंग टू हेल्प यू इन सम वे और द अदर. Very true, very rightly said. Ki what matters is quality of connections you have, not the numbers of connections. So do engage with the right connections, do have the best And connections. one more thing I would love to add is keep on adding value, because you sometimes like आजकल ना विपुल जी बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स मेरे पास आके बोलते हैं लाइक मेरे पोस्ट कौन पढ़ेगा, मेरे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, बट आई व्हाट आई यूज्ड टू टेल देम इज आपके पास शायद जो भी चीज आपके पास है किसी ना किसी के पास नहीं होगा, उसके लिए वो नॉलेज होगा. इनफैक्ट यू हैव राइटली पॉइंटेड अप, क्योंकि हमारे एक ऑडियंस में से मिस्टर हितेश पाई ने भी यही क्वेश्चन पूछा है कि हाउ कैन अ न्यू ग्रेजुएट डू नेटवर्किंग कनेक्शंस ऑन लिंक्डइन. सो जो आप अभी बता रहे हैं उसी को रिलेवेंट होगा, तो इफ यू कैन कवर दिस Yeah, क्वेश्चन ऑल्सो. okay. How can now new graduates do networking? न्यू ग्रेजुएट्स के लिए आपको एक चीज होना, मैंने जैसे बता दिया, न्यू ग्रेजुएट्स इफ यू आर लुकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ गेटिंग अ जॉब, ओके, आई एम डिवाइडिंग दिस इनटू टू पार्ट्स, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ गेटिंग अ जॉब और फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ गेटिंग अ फ्रीलांस और गिग वर्क. ठीक है, फिर इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ गेटिंग अ जॉब, जस्ट लाइक आई सेड, make a list,
make a list of companies you want to work, your dream companies. At least there should be 5 companies. I'm telling you, there should be 5 companies where dream companies you want to work. Okay. And make sure that okay, make sure that, and you note down the companies. मान के चलो, I have my first preference is Google, second preference is Microsoft, third is TCS, fourth is Infosys, and fifth one is Mindtree. Okay, let's say Mindtree. Okay, now I have noted down the 5 companies where I want to work. Now connect with the HRs and recruiting managers of those companies by sending them a connection request. Just like I said, connect with them saying, "Hi, sir. I'm so and so. I'm a fresher. I'm looking for a job in so and so role. I would love to work in your esteemed organization for so and so role, and I'm a so and so pass out. It could be a BCom graduate or a MBA graduate, and attach your resume along with that in that connection note, saying that I would love if you could refer me into your organization, in your esteemed organization. It would be of great helpful for me. I am hereby attaching my resume." Very good. You can also attach your resume with along with that message. Great, great. That is from So, the point of job seekers. Yeah, people. G, I'm so sorry. Please. yeah, so can we have the next question? There is one more question No, from I have the. one more part also. Like for freelancers, there is another approach which I love to get. If you want to Please. get, if you're a new graduate who wants to get into freelancing, okay, because आजकल का trend होती है freelancing का, because it's been a big gig thing. So if you want to get into freelancing, what I would suggest is, first thing is niche के हिसाब से connections बना दो, niche के हिसाब से connection connect कर दो, and cold DMs are the thing. Cold years, but you should have, your content should be very good. You should tell in that cold DM what you have to suggest is why you want to connect with that person, what services are you providing, and how are you going to help that person, in what way are you going to help that person. It could be an agency, it could be another freelancer, whatever it is. And your call to action means how are we going to connect outside of LinkedIn. Outside LinkedIn, how are we going to connect? Mention that call to action, like please, I would love to get into a Google Meet session or whatever it is. That is for freelancers. So these were the two different types, because new graduates I have seen is doing these two things only. Some will go into the job market, some would like to start their own freelancing. So yeah, I had covered both. Yeah, so well covered. Hitendra, hope we have answered your question. And Jayesh Ganatra is also appreciating, quite insightful. Thank you, Jayesh Bhai. Thank you, Pruta, for the appreciation. And now we have a question from Vaibhav. He is asking, what's your process of crafting engaging and SEO friendly headlines? I don't follow a basic process these days. My basic intuition when I'm creating SEO is, I wanted to make sure that I want to make sure that why that whatever website or whatever content I am providing for the agency's website, basically, correlates with the mission of the company. So what I try to do is, when I get into a call with the agency owner, I try to understand, like, what is his mission, what is he, why is he building this agency, and what does he want to achieve in the next coming 5 years. So when I get a deep understanding of these things, I write content according to that. My content strategy these days for SEO friendly headlines is this only: understand what the mission of the company, client's agency is, what are they trying to achieve, and how are they bringing a change into the society. Once you have clear idea of these three questions, mold your content in such a way that it will attract other people. That molding content is your skill. I can't help you in that. कंटेंट क्या लिखना है, मैं उसमें आपको मदद नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम नॉट द व्हाट person who is talking with the client, right? If I was a person, I would do it in a strategical manner. I can't that and all. It will go a bit deep, because which we don't want to get into, because it will be quite boring for the audience. That is why Very true. I would Yeah. keep it So short and yeah, crisp. yes, Vaibhav, hope we've answered your question, and you can follow our expert Swathi on this LinkedIn ID. I'll also put in his LinkedIn ID in the chat box, so you can
follow him from there also, and we'll also put it in the LinkedIn and YouTube post also, so you can follow Swathi from there. And Swathi, thank you so much. It was amazing. Now, one final words from you, your concluding notes, your final message to our audience. My final words to the audience would be is that uh, uh, take LinkedIn seriously. It is a very beautiful platform. It will give you a lot of things. And for freelancers, one thing, make LinkedIn your favorite platform, social media platform, because it will help you. There's one more question. I would take that question after I say this. It will basically, give you a lot of leads. LinkedIn is one of the best lead generating software social media platform that I have seen. So make you utilize of LinkedIn. And for students, um, I would suggest for students slash job seekers. I'm saying this for students slash job seekers. Try to spend at least 30 minutes on LinkedIn every day. Be it you are consuming content or you're giving content, whatever it is, that is up to you, because I can't force you to do what you want. Right? Very I true, can't force very you to true. do things. So at least spend 30 minutes on LinkedIn daily basis. आपको कुछ ना कुछ knowledge मिलेगा, आपको ना कुछ चीज नया चीज सीखने को मिला है. And keep on updating your profile, because as you gain your experience, आपको profile भी change करना पड़ेगा. So keep Very updating, true. playing with your profile, but by playing, don't go into that extreme level, like people will start disliking and would never want to read or look at your profile. That's amazing. Good concluding notes, a good message or good learning message to our audience. Tanuja is also appreciating. Thank you, Tanuja, for joining and appreciating. And as you've rightly said, one last question from Vaibhav. So we'll cover that, and that will be the end of the session. So what tools or softwares do you use to enhance your writing and productivity? For writing, I used copywriting.ai, which is a very good tool. I have used it, and I also make use of ChatGPT, which is the normal thing. For productivity, I don't have any tools. I basically believe in waking up early to improve my productivity. Waking up early, 50 minutes of meditation, just getting up early, 50 minutes of daily exercise, and that's it. And just focus on work. That is my productivity hack. For productivity, I don't have any tool as such, but for writing, I use copywriting.ai, IO, so, and content ideas. There are a lot of websites. I can't go through each and everything now. I'll basically, what I'll do is, after the session, I'll basically make a post of whatever tools I am going to use. I use on a daily basis, ताकि लोगों को help हो जाएगा. But Very for true. productivity, it is just waking up early, doing your rituals properly, meditating, 50 minutes of meditation, just exercise and all. That's it. Great, great. Yes, Swati. Yes, Vaibhav. I'm sure we have covered your question. And Swati, thank you so much for your insightful knowledge sharing session. I'm sure लोगों को काफी कुछ knowledge मिला होगा, काफी कुछ समझने को मिला होगा. And yes, audience, you can connect with Swati also. If you have any direct questions, you can connect with him and you can ask him any questions. Yes, Sure. Thank Swati, you. thank you so much for joining in Thank again, you. and Thank you. Thank you. wishing you all the best. Stay blessed, keep smiling, and keep meditating as you are doing daily. That's amazing. Keep it up. Thank Thank you you. so Thank you, much. Vipulji. Thanks a lot, guys. Thanks for Yeah, joining. see you I hope. soon. See you soon again on our platform, on our channel with some another topic. Thank you Sure. so much. Definitely. Definitely. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Good day. Bye. Yeah. Bye. Yes, so audience, thank you so much for joining in. Today was our 85th session और हम ऐसे ही every weekend different different industry experts को invite करते रहेंगे और उनका experience आपके साथ share करते रहेंगे. So stay tuned, subscribe our YouTube channel Vipul the Wonderful, press the bell icon to get the regular updates. अगर आप LinkedIn पे देख रहे हैं तो follow us, follow me on LinkedIn to get my regular job related and career related updates. And audience, this session was powered by Post Resume HR Consultancy. We are into middle to senior level recruitment services for engineering and IT industry precisely since 2007 and serving across India and Africa. So do connect with us if you're looking for any career guidance, any job related help, or
looking for talent solutions for your organization, do connect with us. We'll be happy to help you. So, with that note, we are ending up this session. Stay blessed, keep smiling. See you next week.